ये उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं और ये इंस्टीट्यूट है जिसमें इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है 79वां। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। मैं फैज़ नसीम। तो कैसे हैं आप सभी? आज है 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे और आज पूरा देश इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर फंक्शन शुरू होने वाला है और मैं दिखाता हूँ आपको। ये 20-21 फ्लैग ले लिए मैंने। सद्दाम भाई ने कहा है कि बच्चों के लिए फ्लैग लेने हैं, तो 20-21 फ्लैग ले लिए हैं, ये लेके जाना है। और ये देख सकते हैं आप, ये मेरा ब्रोच मैंने लगाया हुआ है। तो फटाफट चलते हैं उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट। एंड तक बना आप लोग व्लॉग में। A few moments later. Good afternoon, everyone. I am Humaira Haroon from UCI Class 6. Today, we are celebrating our Independence Day. So first, we all happy Independence Day. As you know, today is the most important day of Indian history. Today, we stand united to celebrate our nation's 79th Independence Day. This day, August 15, reminds us of the heroic journey that led us to freedom from British rule. The path of independence was paved with the sacrifices of countless freedom fighters. We pay homage to great leaders like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmibai, who all had one dream, a free and sovereign India. Our flag is Tiranga. Tiranga is most powerful symbol. It has three colors: saffron, white and green. Its saffron stripe represent courage. White stands for peace and truth, and green sacrifices growth and prosperity. The Ashok Chakra reminds us that progress is a continuous process. We must always keep moving forward. Since 1947, India has great strides in technology and science. We proving that our unity is our great strength. I can add one line: victory lies beyond fear. I wish you all a very happy Independence Day. Jai Hind. Good evening to all my respected teachers and my dear friends. My name is Ayanuddin from class 5th in Osmania Career Institute. Today I am very proud to stand here and speak about Independence Day. Every year we celebrated 15 August because on this day in India became free for British rule. It is a day to remember our freedom fighter like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Rani Lakshmibai and many more who separated their life from our country. We are lucky to be born in free India, but freedom also gives us responsibility. We should respect our country, follow the rules, keep India clean and try to our nation proud. Let us promise today that we will be good citizens and take our country greater highest. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Very good. Good afternoon, everyone. My name is Mohammad Atif from class 8 in student Osmania Career Institute. I wish you all a very happy Independence Day. It is my pleasure to deliver a welcome speech on today is the most very important day in India history. Today we are celebrating 79 Independence Day of India. India became independence on 15 August 1947 from a cruel British rule. This independence we got was result of lot of sacrifice and struggles of our great freedom fighter like Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose and Mahatma Gandhi. Today we are fortunate that we are born in an independent country and we have our own fundamental rights. On this day, the national flag is hoisted at every public place. So it is our responsibility to sincerely perform our duty, progress together for the growth and development of our country. Certainly, the day is not far behind our country. We'll be strong and powerful in every field. Happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. Hello everyone, I am Askar from Uspania Career Institute of Class 7. Today, we all are here to celebrate our country's 79th Independence Day. It's a day to remember how we became a free nation, but it's also a day to celebrate how far we have come. We should be proud of our country's journey and all the great things we have done together. Since 1947, India has grown so much. We have reached the moon, made big strides in technology, and shown the world how strong our minds are. This progress is the result of hard work and dedication of millions of people who have built our country brick by brick. Our greatest strength is our unity. We are a country of different cultures, languages, and beliefs. Yet, we stand together as one. This unity is a beautiful gift and it is what makes India special. We must protect this unity and treat every person with respect. As the young people, we are the future of this great nation. It is our job to keep working hard, be kind to each other, and help to solve the problems still we face. Let's make sure that the India of tomorrow is even better and brighter than the India of today. Let's celebrate this day with pride and a promise to build a great future together. Happy Independence Day to all. Thank you. गांधी जी की अहिंसा की ताकत, भगत सिंह का जोशीला बलिदान, नेताजी की तुम मुझे खून दो की गर्जना। ये कहानियां हमारे दिलों में जिंदा हैं। लेकिन दोस्तों,
आज़ादी का मतलब सिर्फ झंडा फहराना नहीं, अपने सपनों को उड़ान देना, अपने देश को चांद तारों तक ले जाने का जज्बा। लेकिन आज का भारत डिजिटल क्रांति, स्टार और मंगलयान से चमक रहा है। और लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं, गरीबी, अशिक्षा, जलवायु परिवर्तन हमें चुनौती दे रहे हैं। तो आइए हम इस स्वतंत्र दिवस पर एक कसम खाते हैं, अपने भारत को न सिर्फ आज़ाद बल्कि शुद्ध, साफ और हरा भरा बनाएंगे। छोटे छोटे कदमों से, चाहे वो पेड़ लगाना हो, चाहे वो किसी की मदद करना, हम बदलाव जरूर लाएंगे। चलो मिलकर कहें जय हिंद, जय भारत। Dear friends, my name is Sheikh Ayan and today I feel proud and excited to speak on this great occasion, our Independence Day. On 15 August 1947, India became free from British rule, but this freedom was not a gift. It was earned through the hard work and sacrifice of many great heroes. Do you know who they were? They were Mahatma Gandhi, who taught us peace and truth; Bhagat Singh, who gave his life with a smile; Rani Lakshmibai, who fought like a lioness; and many more who did not think of themselves. They only thought about India. Because of them, today we are free. We can go to school, dream big, and live with pride. Just because they stood strong for us. Now it is our duty to make their dreams come true. We must become honest, kind, and brave citizens. We must say no to hate and say yes to unity. Let's promise today that we will always love our India, respect our flag, and make our country proud. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Sinarif, student of Osmania Career Institute. Today, as we celebrate Independence Day, we honor the sky, we fought for freedom. This day, power of unity relies. Equally important, the role of the education, prevention, enhancing. To hard-won liberty, education, empower and the individual, the break of the cycle, poverty, and foster to information capable of citizen contributing to national development. As we enjoy our freedom, let us commit to ensuring every child quality education. Thank you and happy independence. Evening, one and all present here. Myself, Zoya Parveen, student of Osmania Career Institute. Today, I am standing in front of you to represent a speech on Independence Day. Today, we have gathered here to celebrate Independence Day of our country. On this day, in 1947, our country got freedom from British rule. Many brave freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Rani Lakshmibai, and many others gave their lives to make India free. We salute them for their courage and sacrifice. Independence Day is not just a day of celebration, but also a day to remember the struggles and sacrifices made by our ancestors. Because of them, we can live in a free country, speak freely, go to school, and dream big. We should always be thankful for our freedom and work hard to make India a better country. Let us promise to be honest, helpful, and responsible citizens. Let us keep our country clean, green, and on. Together we can build a bright future of India. Jai Hind, Jai Bharat. जो बहुत ही होनहार स्टूडेंट है इस कोचिंग का, जो कि अलीगढ़ एंट्रेंस में क्लास 9th में मुंतखब हुआ है, उसके लिए तालियां हो जाएं। उनके आने से कबल मैं इतना ही कहूँगा कि किस लफ्ज़ से तारीफ करूँ सोच रहा हूँ, किस लफ्ज़ से तारीफ करूँ सोच रहा हूँ, हालांकि मैं अल्फाज के वादी में खड़ा हूँ, हालांकि मैं अल्फाज के वादी में खड़ा हूँ। और 4 शेर और रंगो रस की हवस और बस, रंगो रस की हवस और बस, मसअला है दस्तरस और बस, मसअला है दस्तरस और बस। यूं बुनी है रगे जिस्म की, यूं बुनी है रगे जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस। ये सब तमाशे कुन खत्म शुद, उसने कह दिया बस और बस। Good evening, everyone. My name is Gulnaz from Osmania Career Institute. Today, we gather to celebrate India's Independence Day, a day that fills our hearts with pride and gratitude. On 15 August 1947, our nation broke free from colonial rule. Thanks to the sacrifices of brave freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, and countless others. Their courage and determination gifted us the freedom we cherish today. Independence Day reminds us of the value of liberty, unity, and responsibility. It is not just a holiday, but a day to honor our national journey and place to make it stronger.
As young citizens, we must contribute by studying, respecting our culture, and helping our community. Thank you, Angel. Good evening, respected teachers and my dear friends. My name is Ayatiri. I am student of Usmania Career Institute. Today we are gathered here to celebrate Independence Day of India, a very proud moment to all of us. Every year we celebrate 15 August because on this day 1947 our country became free from British rule. Great leaders like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, and many others sacrificed their lives so we can live in a free and independent nation. We must always remember their struggle and be thankful. No, it is our duty to make India a better, stronger by being good. Citizen, honest, kind, and hardworking. Let's make India proud. Thank you and happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग। नेक्स्ट गुलनार। Good evening, everyone. I am Zoya from class 5th Osmania Career Institute. First of all, I wish you very happy Independence Day. I feel great to present this speech. This day is the most important day for all of us because on this day in 1947, we got independent from the British rule. Our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmibai, and many others devoted their entire life for the independence of our country. Today we are fortunate that we are born in an independent country. So it is our responsibility to sincerely perform our duty for the growth and development of our country. Our brave soldiers fight continuously on border to protect our country. Our freedom is priceless. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat. Good afternoon, everyone. My name is Muzaid Ali. I am from UCI class 8. I wish you all a very happy Independence Day of India. India became independent on 15 August 1947 from a cruel British rule. We was a lot of sacrifices and struggle of our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Chandrasekhar Azad, Ashfaqullah Khan. Happy Independence Day. My name is Arsha. I am a student of class 8 from UCI. Today I am going to speak a few words about Independence Day. We all know that 15 August is a very special day for our country. On this day, 1947, India became free from British rule. This freedom was not easy. Many great leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Bhagat Singh and Subhash Chandra Bose gave their lives for our freedom. Because of them, we are living in a free country today. We can study, speak and dream freely. We should always be thankful to these heroes. Independence Day is not just a day for celebration. It is a day to remember their sacrifice and to think. Thank you. और वहाँ के बहुत ही मशहूर व मारूफ शायर जिन्हें लोग निज़ाम सर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शेर व शायरी हो जाए फिर। मैं उन्हें दावत सुखन देता हूँ कि वो आए। जाइए अपनी शायरी कर लीजिए, कर जाइए। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों की डिमांड थी भाई, बुलाया जाए सबको। कुछ कहने की आप लोगों से। हमारे दोस्त हैं, ये सब बैठे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे अभी फैज़ ने बताया कि वहाँ पे उस्मानिया में प्रोग्राम है, तो हमने कहा जरूर चलते हैं। चलो 4 में से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। कितना टाइम देना है मुझे? आप अपने हिसाब से। हम अदाएं हसीन रखते हैं, हम अदाएं हसीन रखते हैं, सांप नाचे वो बीन रखते हैं। हम अदाएं हसीन रखते हैं, सांप नाचे वो बीन रखते हैं। हमको कोई मिटा न पाएगा, हम खुदा पर यकीन रखते हैं। क्या बात है। अल्लाह नहीं चाहेगा हम लोगों को मिटाने वाला कोई नहीं। चलिए मैं एक गीत पढ़ता हूँ। मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान, मेरा
दोस्तों अब ये मेरी ज़बानी सुनो, अपने भारत की तुम ये कहानी सुनो। दोस्तों अब ये मेरी ज़बानी सुनो, अपने भारत की तुम ये कहानी सुनो। अपने बीवी से बच्चों से मुंह मोड़ कर मुल्क पे जो लुटी वो जवानी सुनो। वीर अब्दुल हमीद की ये दास्तां, मेरा हिंदुस्तान मेरा हिंदुस्तान। मैं अपने भारत की खासियत बताता हूँ क्या है मेरे भारत में, देखिएगा। सारी दुनिया में कहते हैं भारत महान, मीर तुलसी कबीरा इसी की है शान। सारी दुनिया में कहते हैं भारत महान, मीर तुलसी कबीरा इसी की है शान। हिंदू मुस्लिम हो सिख या ईसाई कोई, सबके दिल की ये धड़कन सभी की ये जान। ऐसा इकबाल का है ये सारा जहां, मेरा हिंदुस्तान मेरा हिंदुस्तान। Good evening, everyone. I am Asmara Salman, and today I am going to give a speech on India Independence Day. We celebrate Independence Day every year on 15 August. This year in 2025, we are celebrating 79 years of freedom. On this day in 1947, India became free from British rule after 200 years. Our freedom did not come easily. Many brave people fought for it. To name a few, Rani Lakshmibai, Mahatma Gandhi, Sardar Patel and Jawaharlal Nehru played an important role. When India got independence, Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, delivered a historic speech and the Indian flag was raised at the Red Fort in Delhi. Since then, every year, the Prime Minister raises the flag there and speaks to the nation. After freedom, India has grown a lot. We are now the fourth biggest economy in the world. But even today, India faces some problems like poverty and pollution. As children, we can help by studying well, keeping our environment clean, and being kind and honest. Let's promise today to love our country, respect others, and do our best to make India better. Jai Hind. उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स जो कि अब मिमिक्री करने जा रहे हैं, तो आप लोग पूरी वीडियो देखें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। सद्दाम सर ने मुझे तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने के लिए कहा गया है। हाँ, सद्दाम सर ने कहा है कि अब मैं तुमको इंग्लिश पढ़ाऊंगा बेसिक से। मैं उससे पहले तुम्हें उर्दू पढ़ाता रहा हूँ ना। अलिफ बा ता सा सुनाओ। अलिफ बा ता सा। सुना। अलिफ बा ता सा जीम खा खा दाल दाल कहाँ गई? दाल कहाँ गई? अलीगढ़ की तैयारी कर रहे उर्दू पढ़ने तगड़ा है यार। अलिफ बा ता से नहीं आ रहा है तुम्हें? डेंजर यार। भाई जो काम करने को दिया था काम चेक कराओ। चिपका दी हमने सीधा छाड़ी। क्या लिख रहा है? मेरे रूल्स के खिलाफ जाएगा। मैं खड़ा हो। रूल्स सुना। रूल्स सुना। अरे तगड़ी आवाज यार। नहीं यार, उस दिन तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था सबको। किसे याद है रूल? किसे याद है भाई रूल? उमर तुम खड़े हो। तुम बहुत बड़ी अम्मा बनते हो। किसे याद है? लिखे। जब मैं लिखवा रहा था तुम आए थे? आए नहीं थे?
एक काम कर, तू अपनी जगह पे मुर्गा बन जा। लड़की के सामने बेइज्जती हो जाएगी। लड़की शर्मा रहा है। सादा बड़ा तेज मार रहा है यार। तेरे पापा तुझे यहाँ पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं और तू यहाँ क्या कर रहा है? हमारा गिरती कर रहा है। इधर काफी कुमार अभी तू टंकी है क्या? बताएंगे बिल्कुल से। ये काफी घुमाने आता है। तुझे घुमा दूंगा, इस बार छोड़ दे रहा हूँ भाई। कौन कह रहा है मैं सच्ची खाता हूँ? पोल पट्टी खोल दी। मुँह चलाओगे? अच्छा, वो आतिफ कह रहा था, आज आया नहीं है ना? बताऊंगा उसे, तो आने दो। और जिसने होमवर्क नहीं करा, यहाँ एक्स्ट्रा पढ़ेगा 2 घंटे, और अगर कोई गया, बताऊंगा उसे। चलो, जिन का काम हो चुका है, पूछा मंजिल बेस्ट से 5th प्राइज हासिल किया है मोहम्मद आतिफ ने। आ जाए जल्दी से। नेक्स्ट 5th प्राइज देने के लिए मैं एक बार फिर से निजाम सर को बुलाना चाहूँगा। ये हुई बात, ये बनी बात।